राइट, स्टार्ट करते हैं। ये सब वीडियो भी बहुत काम का होता है, पता है। भले सुनने में थोड़ा रोबोटिक लगता था, तुम लोग को लगता है कि इसका एडवाइस भी अच्छा नहीं होगा, बट तुमको समझना होगा कि ये सब नया चैनल्स है और यूट्यूब प्रमोट वगैरह ये सब चीज़ को नहीं करता है। तो ये सब बहुत सारा उस टाइप का चैनल होता है जो ऑलरेडी डिलीटेड होता है। फिर वो बेचारा जो क्रिएटर है वो दोबारा से नया चैनल बना के दोबारा से वीडियो अपलोड कर रहा होता है। तो इसका लाइक व्यूज़ वगैरह जैसे कि देख के तुम जज करने का बिल्कुल ट्राई मत करना। इसका जो एडवाइस है ऑलमोस्ट अच्छे खासे चैनल का अच्छा एडवाइस होता है, मतलब सारे का नहीं। अब हो सकता है कि तुम्हारा फीड ही ऐसा चुतियाप होगा कि बेकार एडवाइस आता होगा, लेकिन देखो तुम इसको। Here are 8 things a man should never do with a woman, listed in no specific order. 1. Don't confide in a lady about your troubles. Female. Many of you think that a woman will want you more if you are vulnerable, but that is untrue. हाँ, ये एक्चुअली बॉलीवुड और मूवी वगैरह से थिंकिंग आया है कि द मोर आई ट्राई टू ओपन अप टू हर द मोर अट्रैक्टेड शी विल। हाँ ठीक है, अगर तुम्हारे सामने कोई इस तरह से ओपन अप होगा, अपने बारे में सारा कुछ बताएगा, तो तुम्हारा अट्रैक्शन 100% राइज करेगा। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड सी इज़ अ फीमेल, ठीक है। हर होल थिंकिंग इज़ डिफरेंट देन यू। A queen wants a king who can protect her, not a man who can't handle his own life. क्योंकि साफ दिखा रहा है कि तुम्हारा ऑलरेडी लाइफ जो है वो ऑलरेडी डाउन जा रहा है, या इवन अब भी जा रहा है तो फिर डाउन हो जा रहा है। तो मतलब उसको अंदर से सिक्योरिटी थ्रेट आएगा उसको, और एक तरह से ही लूज लूज सिचुएशन है। तुम सोच रहा है कि इस तरह से तुम ऑनेस्ट हो कि उसके अंदर किसी तरह का मूवी वाला प्यार जगा देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लिखवा लो हमसे। She might encourage you to talk about your issues, but keep in mind that women have many options and will try them all to find the best one. Women are hypergamous and want the best man. ये जो टर्म है हाइपरगमस, ये कभी इसके बारे में स्टडी करना, तुमको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट टर्म है। और ये सब जानने के बाद हेट करने का कोशिश मत करना, क्योंकि तुमको समझना होगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग चाह रही है कि हाँ हम ऐसा करें। वो एक तरह से बायोलॉजिकल इन लोग का अंदर से, क्या बोलते हैं उसको, इन द बोन, बोन में है वो, ठीक है। तो ऐसे ही बोलने वगैरह से चेंज नहीं हो जाएगा, वो एक तरह से हज़ारों साल से ऐसा ही है। इधर जाके और थोड़ा ख़राब हो गया। Instead of disclosing your problems, she will test you to determine if you are superior to the other men in her DMS or if you are just like the others. Assure her that everything is all right. अगर कुछ भी इशू भी चल रहा है, इवन फाइनेंशियली है या फिर कुछ भी इशू है तुम्हारा, हेल्थ वाइज है, हेल्थ वाइज अगर दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो ज़रूरत नहीं है उसको बताने का, ठीक है। Always be strong like a pillar or a stone. Okay. I know this is not gonna sound right because you're gonna think that, oh, I want her to have she is my companion, I should share all the details that I have, even if that detail is very small। ये सब बेवकूफ़ी है। Talking excessively can detract from your appearance. Tell her how you handled it when you meet her again after you've resolved your issue. That's what makes a man different from a boy, and it works. If you need to talk about your issues, speak with a different individual who And it should be a man। will completely get your predicament. Keep your plans a secret. The first rule is to demonstrate results so that she will trust you and regard you as someone she can turn to in times of need. Never discuss your issues with others. 2. Disagree on a number of points. Don't accept all of her offerings हाँ, जैसे or कभी कभार होता है कि उसको ऑफेंड नहीं करना है, ठीक है। उसका जो जो भी पॉइंट है, इवन इफ इट इज़, अगर तुम एग्री कर रहा है तो ठीक है, डिसएग्री भी कर रहा है तो भी तुम उसके सामने मुंह पे उसको डिसएग्री नहीं करता। ये वन ऑफ द मोस्ट डिसऑनेस्ट फेक स्ट्रेटजी ऑफ योर्स। और इसको हम तो फेक बोल रहे हो तो ट्रिपल फेक बोलेगी। सो थोड़ा सा इसमें ऑनेस्टी होने का थोड़ा सा ज़रूरी है, हल्का सा एलिमेंट डालना है कि अगर उसका कुछ नॉनसेंस निकल रहा है तो कॉल आउट कर सकते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ पे एग्री, हाँ आसमान काला है, हाँ अच्छा हाँ, ऐसे तो ब्लू था लेकिन अभी तुम बोली तुम देखे तो हाँ काला है। agree with all she says. If you agree with everything she says, you come across as someone who lacks self-awareness. When women see this weakness, they will put you in the friend zone and use you for favors like driving her and her friends to the club or taking her shopping. Sometimes she will ask for a favor, but you should say no because she would have figured it out on her own if कहने you का ये भी सेंस है कि सामने से अगर किसी तरह का डिमांड है, ठीक है, किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन है, तो एक अपने जोन में हो के उस सब इंस्ट्रक्शन को कंसीडर करना है या ना करना है। मतलब एक तरह से उसका हर एक वर्ड को एज अ कमांड नहीं लेना है, ठीक है। कुछ बोली तो नहीं,
नहीं, हम एक एग्जांपल हमेशा देते हैं, अभी भी देंगे। यू आर अर्थ सीज मून, ओके, ऐसे रोटेशन चल रहा है उसका, ठीक है। और ये एक हेल्दी फैमिली का निशानी है। अगर अनहेल्दी बनाना है तो इसको मून को ऐसे छोड़ दो और अर्थ को कहो कि घूमो। Weren't around. Don't fail this test 3 and take your time getting to know her because you need time to truly get to know her. In the beginning, everything feels intense. It's the honeymoon phase, and you might think she's the one. But if you commit too soon, you might later realize she's not the right fit, which is a situation you want to avoid. Spend at least 6 months getting to know her, seeing her in various settings, understanding who she is early on. और इसमें सबसे बेस्ट चीज़ कर सकता है तुम इसके साथ ट्रिप वगैरह जाओ या फिर कुछ भी सब, ठीक है, मतलब उसके साथ कुछ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हिस्सा लो, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ में, तुमको पता चलेगा उसका अपब्रिंगिंग कैसा है। और हाँ, इसमें अब ये नहीं कह रहे हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो एकदम छांट ही देना है। क्यों? क्योंकि तुमको समझना होगा कि जो फीमेल का जो बिहेवियर है काफ़ी मेलिएबल है। मेलिएबल इन द सेंस कि कैन बी चेंज्ड, ओके। इफ़ यू आर स्ट्रांग इनफ, यू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट, ए फीमेल इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द मैन सी इज़ विद। हो सकता है उसका जो इन्वायरमेंट पहले थी उस तरह का वो इन्वायरमेंट ही था कि उसको ऐसा रोल लेना पड़ा था। क्योंकि अब तुम एक नया रोल में हैं तो उसका पुराना बिहेवियर तो आएगा ही, लेकिन धीरे धीरे वो चेंज हो जाएगा, तो इसको लेके उतना कंसर्न नहीं होना है। हाँ, लेकिन इसमें अगर कुछ ओवर द टॉप हो रहा है तो उस पर ध्यान देना है, और अगर ज़्यादा ओवर द टॉप है तो उसको साइड कर देना है। And only seeing her best self. However, as time goes on, her genuine personality will show itself. After 6 months, if you still feel that you click, you can proceed. In the meantime, leave your choices open. There's no need to hurry into establishing a strong foundation before committing to anything. 4. Don't buy her love. The simple rule is to avoid trying to win her over with presents or material possessions. She is valuing the gifts over your character in masculinity, and those are the qualities that genuinely attract masculinity and femininity, not. खास करके इसमें ये ध्यान देना है कि किसी नॉर्मल कभी कभार, मतलब एक तरह से जब एक्सपेक्टेड हो तो वो मत करो जो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, इफ कोई, मतलब कहने का सेंस है कि अगर कोई कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, ठीक है, तुम्हारे बीच, तो उसको ठीक करने के लिए कभी भी डोंट ट्राई टू यूज गिफ्ट्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, नो, इट विल ऑलवेज बैकफायर। Material possessions. If she is with you, let it be because of might and you are or what you give. A smart woman will see this as weakness for who you are or self-esteem. Eventually, you'll start to question whether she's with you for who you are or what you give. And if you give her stuff all the time, she might think you're making up for some insecurities. यस। A smart woman will see this as weakness and may leave, so avoid it. Instead, demonstrate your value through your actions, confidence, and character. 5. Don't mistake her generosity for flirtation. Women are inherently sympathetic, and their generosity isn't always amorous. Many men misinterpret this, but here's a quick method to distinguish between the two. Consider your interactions to be similar to a game of ping pong, where the ball moves back and forth. Similarly, in a conversation, questions and answers are exchanged. It's like playing ping pong alone if you're the only one asking questions and she doesn't respond. If she's participating in the conversation and answering your questions in return, that indicates she's actually engaged. Never apologize too much. You might be surprised to learn that many men apologize too frequently. हाँ, ये भी मूवी से ही आया है, क्योंकि मूवी में भी थोड़ा सा भी होगा तो वो क्या करेगा कि बड़ा सा पोस्टर पे लिखवा देगा SORR वाई सॉरी, और या फिर फूल भेजेगा, मतलब बहुत टाइप का, ये सब एक्चुअली ब्रेन वॉशिंग फ्रॉम मूवीज। Even when they haven't done anything wrong. This can come across as words. Don't rush in to apologize because you're a busy man. Being late is not a huge deal. If you make a mistake, acknowledge this. This demonstrates that you're considerate. She wants to know if you're old enough to carry on the conversation with assurance and poise illustration. Perhaps she jokes about a scene in a movie or says something flirtatious to gauge whether you're on the same page as a stoic person. You stay calm and participate in the ये conversation पॉइंट फिर से सुनना she होगा। rather than reactive time to consider her feelings. This demonstrating I understand is not a huge deal. If you make a mistake, acknowledge her viewpoint by saying, I understand what you're saying, and take some time to consider her feelings. This demonstrates that you're considerate rather than reactive. When you make a lesson number 4, topics of romance.
She wants to know if you're old enough to carry on the conversation with assurance and poise illustration. Perhaps she jokes about a scene in a movie or says something flirtatious to gauge whether you're on the same page as a stoic person. You stay calm and participate in the conversation without jumping right in. This demonstrates that you're in control of your emotions and desires, which only increases your attractiveness in her eyes. When it comes to attraction, Stoicism teaches us that although we cannot control other people's actions, we can control how we react to them. If you can recognize these 6 signs in a woman, it's likely that she's expressing interest in more than just casual conversation. However, as a true Stoic, you remain calm, collected and patient, allowing the connection to develop naturally. Yeah. There's no need to rush because confidence lies in knowing that everything will work itself out. If you found value in this breakdown of Stoicism and attraction, don't forget to... All right. Controls.